Hi, I think due to some technical glitch, I lost the network. My name is Shalini Kumar. I'm a dietitian by profession and a trained skin and hair consultant. I also provide healthy skin and hair diet plans and DIYs, that is, do it yourself. These are basically customized diet plans for healthy skin and hair. I'm an obesity expert and currently I am having clients from overseas, Hong Kong, Australia, and of course the pan India, along with the underlying obesity, which is like a uric acid, high blood pressure, high cholesterol, thyroid, PCOD, which are lifestyle disorders. I deal in all these disorders and provide healthy eating habits and provide diet plans on diets which reinforce healthy eating. Guys, that is what is my aim. I do not administer a lot of medicines and all. So today topic which I have chosen is a much talked about topic in town, which is how to boost your immunity during this COVID period. We all know that it is a viral infection and it take a loads of medicine, not even much medicines which have been created to fight with this particular problem. So the only thing what we can do is we can strengthen our immune system, and that is in your hands. You have your immune systems. Lot of medicines cannot do it, guys. The immune, it will not happen overnight. You'll have to work towards it. Start correcting your eating habits now so that tomorrow you are in a better health and you are not dependent on medicines. As a nutritionist, I do not administer lot of medicines. I always administer, look up to your kitchen ingredients, have healthy habits, and that is sufficient for your lifestyle. So I'll begin with the day, how you should start your day to have a better immune system. When you get up in the morning, try and start your day with a glass of water, as when the resting phase was there, your body is going to be getting up after a rest. So do not give it a shock with the heavy concoctions of a tea or to detox or cleanse. So start your in water. There is no such thing that you should drink a herbal concoction only. Concoctions, those are excellent, but you can always start with the plain water as well. Lemon water is definitely extremely good for you, and people who think it does not suit them, they can also have herbal teas. But guys, also one thing here कि अगर हम ये सोचे कि हम हैं और हम काट और उसी से ही हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप में स्ट्रांग हो रहा है एंड 100% healthy, no, it is not like that. To reap the benefit of all these ingredients what you are putting into your body, your system should be strong, your digestion system should be strong, it should be clean, and your gut should be strong. After drinking any type of water, a plain water is good to go with, or a fresh lime is good to go with. Always give your body a morning energizer in the form of like a fruit, or you can have soaked nuts, maybe a 4 almonds or half. Also do not take a overdose of nuts. ऐसे पूरा handful of nuts is something your body does not need. So you can always just take about a few almonds. Cinnamon water ले सकते हैं. See, there are already many spices in our diet which we use and which has quite a good antibacterial and they are good for your body, like turmeric है, cinnamon है, आपका black pepper है, लौंग है, ये सारी चीज़ें, मोटी इलायची है, तुलसी है, चीज़ें तो हमें पता है, हम अपनी डाइट में वैसे भी इंक्लूड कर लेते हैं. बट इसके अलावा हमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. See, there are certain vitamins and minerals which holds a lots of responsibility for strengthening your immune system.
These are like vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin A. So these four nutrients are of utmost importance when it comes to building your immunity. Again guys, I would not get into or I would not say that आप कितना विटामिन सी किससे आ रहा है, कितना विटामिन ए किससे आ रहा है. अगर आप एक नट शेल में बात करें, डू अ रेनबो शॉपिंग. अगर आप रेनबो शॉपिंग करते हैं, इफ़ यू आर ईटिंग ऑल कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द डे, यू डू नॉट हैव टू बी वरिंग कि मेरे को विटामिन सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ विटामिन सी हमारी बॉडी को हमें बाहर से ही प्रोवाइड करना होता है. आवर बॉडी डज नॉट प्रिपेयर दिस. So the too much dose is also not beneficial. It will have a more load on your kidneys. So आप normal अगर veggies and fruits अपनी diet में add करेंगे, it is good to go with. For example, sources like bell peppers. Red bell pepper is an extremely good source of vitamin C. A fruit, all citrus fruits are excellent source. Even guava is not a citrus fruit, but it gives you a vitamin C double the amount of what and a lemon can give you. So you can include all these sources in your diet. As I said that अगर आप normal diet में आप rainbow shopping करते हैं, that will provide you enough vitamins and minerals to go with. Another very important mineral in a diet which you should include is zinc. Zinc is important for the functioning of our nervous system. For non-vegetarians, you can have this through like a lean meat. For vegetarians, mushrooms, spinach are very good sources of zinc. Again, zinc, I would not say कि अगर आपको लगता है कि ये अभी बहुत कोविड में आ रहा है, क्या विटामिन सी खा लीजिए, जिंक की टैबलेट्स खा लीजिए. आई वुड नॉट एडमिनिस्टर. हेल्दी, अपनी हैबिट्स को ही हेल्दी कीजिए. मेडिसिन पे उन लोगों को जाना पड़ता है जिनको प्रॉबेबली कोई और प्रॉब्लम है एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आई है. अगर आपके पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं हैं, सो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट पॉपिंग इन मेडिसिन्स. आप अपना खाना ही ठीक कीजिए. इट विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. नेक्स्ट थिंग, योर ईच मील शुड हैव some amount of protein in it, to build your immunity system. Now protein is something which are building blocks, we all know. I will burst one myth for protein here is that, let's say, people who are on a vegetarian diet or people who are on a vegan diet, they do not get sufficient amount of protein. Dear, if you are eating enough amount of green leafy vegetables, they have a capacity to build amino acids, essential amino acids in your body. So you have to concentrate on eating right food and adding lots of green leafy vegetables to your diet, fresh fruits and vegetables. One more myth I would like to break here is that कि आप vegetables and fruits को आप ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन vegetables को try and take it in a juice form. इट इज़ वेरी हेल्दी. इसको आप जूस को ब्लेंडर में आपको ब्लेंड करना है, इसको आपको स्ट्रेन नहीं करना. आप जितना वेजिटेबल्स, बिकॉज उतनी रॉ क्वांटिटी में हम वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं. वेजिटेबल्स के बहुत बेनिफिट हैं, बट द टाइप ऑफ कुकिंग डिस्ट्रॉयज ऑल द विटामिन, ऑल द मिनरल्स. So by the time it reaches your body, it is not left with any good thing. I just did my course on how you can grow your hair naturally and grow your skin naturally. I learned a beautiful thing in that is that आप कोई भी खाने का जब कुकिंग मेथड यूज़ करते हैं, आप सोचिए जितना ज़्यादा आपको बर्तन साफ़ करने में टाइम लग रहा है, जितना खाना आपके बर्तन के साथ चिपकेगा, आपकी बॉडी को भी उतना ही टाइम लग रहा है उसको क्लीन करने के लिए. सो आप जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनकी रॉ स्टेट में विदाउट खा सकते हैं, आप एज इट इज़ खाइए. इट इज़ वंडरफुल टू ईट अ फ्रूट, वी ऑल नो दैट. बट अगर आपने उसको जूस फॉर्म में क्रिएट कर दिया, आपने न्यूट्रिएंट्स डिस्टॉर्ट कर दिए हैं, आपने फाइबर निकाल दिया है, आपने उसका छिलका निकाल दिया है, आप इसको ब्लेंड करके लीजिए. इट स्टिल हैज़ बेनिफिट्स. और अगर आप पूरा खा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. आई सजेस्ट यू हियर अ थंब रूल फॉर अ फ्रूट. यू शुड हैव फ्रूट either half an hour before your full meals or 1 to 1.5 hours after your full meals. That is why my best suggestion for the fruit is early morning. After your water, start your day with the fruit.
try and do 10 to 15 minutes of a meditation. If you can go for a walk, nothing like it. Unlock 4 में अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आप प्लीज़ वॉक भी कीजिए, there is no problem. Now coming to the another aspect in your diet is grains and how much grains you should eat. You should eat a combination of grains. A healthy diet does not say कि आप रोटी नहीं खाइए, आप दाल नहीं, आप चावल नहीं खाइए. आप प्लीज़ सारा कुछ खाइए और इनको कॉम्बिनेशन खाइए. जितना आप कॉम्बिनेशन खाएंगे, जितना आप एक बैलेंस्ड मील खाएंगे, आपकी बॉडी को बिना किसी मेडिकेशन के उतना ही इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प मिल रही है. बिकॉज इवन ऑल द पल्सेस एंड लेग्यूम्स दे कंटेन सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स विच यू कैन गेट ओनली फ्रॉम दोज, राइट. Now next coming to something like you should junk food, and जितना आप जंक फूड को रिड्यूस करेंगे आप उतना ही अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोर द यू ईटिंग जंक फूड, द मोर लोड यू आर पुटिंग ऑन योर बॉडी. द मोर यू आर ईटिंग fresh fruits close to their form, natural form, you are retaining their nutrients. So it's very very essential, guys. The way you cook the food, it's very important. That is something which can really help you boost. Now coming to a water point, I like to discuss here is that water is an essential part of our body. Our body is 70% water, so you need to drink that. You need to, but too much of water is also not needed at the same time. If you drink too much of water, आपकी बॉडी की नीड, कोई भी एवरेज मैन एंड अ वीमेन डज नॉट नीड मोर देन 3 to 3.5 liters of a water. If you are in a habit of drinking 4 to 5 liters of water, guys, kindly stop that, because आप टॉक्सिन में आप अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी लीच करवा रहे हैं. सो जितना ज़्यादा आपका जो वाटर है जब रिलीज़ होगा बॉडी से, वो आपके टॉक्सिन्स के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज़ करेगा. सो यू डू नॉट नीड एक्सेसिव वाटर फॉर योर बॉडी. 3 to 3.5 liters or 10 to 12 glasses of water is good enough to go with you. Also, there is a timings that I always suggest to my clients that you should drink, is that during the night you should not drink lots of water, because coming from here I touch upon a sleep pattern also. During the night you should complete your major water portion by about 6 to 7 o'clock. उसके बाद you should take a sips of water. Do not gulp a liter of water after that. I tell you the reason. The more you water drink during the evening night time, you will have to go and use the washroom उतना ही ज़्यादा. आप जितना ज़्यादा वॉशरूम यूज़ करेंगे, आपकी स्लीप जो होगी वो डिस्टर्ब होगी. सो दिस कैन बी वन रीज़न फॉर पीपल हु गेट अ डिस्टर्ब. Taking care that you should have a proper sleep. Now coming to my next component in a healthy eating habits is also a healthy habit is also a sleep. Sleep is your doctor. Remember that. People who are not getting a good sleep, guys, try and find out why you are not getting a good sleep. Body needs 6 to 8 hours of a sleep to have a fresh day next day morning. It's very very important that अगर आप एक रात पहले ठीक से नहीं सोए हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर बॉडी टू फंक्शन अगेन 100%? सो स्लीप इज़ योर डॉक्टर. स्लीप इज़ योर बॉडीज नेचुरल डॉक्टर. सो अगर आपको नींद अच्छे से आ रही है, दैट मीन्स ऑफकोर्स यू आर हेल्दी. बट अगर आपको बहुत डिस्टर्ब नींद आती है, तो प्लीज़ फाइंड आउट अ रीज़न and get in touch with your doctor or a nutritionist why you are not getting a good sleep. Then coming to the sunlight. Taking sunlight is equally important as taking the food. 80% of people, when we get our blood test done now, shows the deficiency of vitamin D and calcium. The major reason is that we are not exposing ourselves to natural light. Now आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई I'll burst one myth here. आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप धूप में जो 9 या 10 बजे की धूप होती है आपको वही लेनी है. आप मॉर्निंग से लेके 6 o'clock तक के पहले की कोई भी सनलाइट ले सकते हैं. इवन ऑन अ क्लाउडी डे वी गेट द सनलाइट इन व्हाट अ बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी.
क्योंकि विटामिन डी के सोर्सेज डाइट में बहुत कम है. ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, स्पेशली फॉर नॉन एग्स में होता है, योक में रहता है, मिल्क में होता है. लेकिन जब भी आप डाइट से लेते हैं, इन सब की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी बॉडी में. अलॉन्ग विद कैल्शियम है नहीं आपकी बॉडी में. सो ये सारे को फैक्टर्स हैं which also has to be taken care while we are talking about how to boost immunity. So 20 minutes of sunlight is what you need for a day, guys. You can take it anytime. I have a special video on or a special write up on which sunlight how to take, which is good. Even you can take it through a leaf. आप एक लीफ के थ्रू भी सनलाइट ले सकते हैं if it is very scorching. So that will also help you in the synthesis of vitamin D. So viewers who all are interested in knowing more about these facts, you can get in touch with me on my number and I shall be telling you more about it, what you need exactly. So guys, now my last point in a healthy eating habit is about a mindful eating. Again, it's very important to practice something like a mindful eating. Now mindful eating is something, try to have your meals at the same time, try to condition your body on the same timings. It will help people who are overweight to overcoming this situation a lot. Chew your food very well. Thank God for having morsel in your mouth. Chew it at least 30 to 35 times. You need to really count it. Only then you can achieve. In 20 minutes your brain gets a signal that your stomach is full. So आपको 20 minutes में चाहे आप हाई कैलोरीज ले लीजिए चाहे लो कैलोरी ले लीजिए, 20 minutes में your body will get to know कि your stomach is full. It takes 21 days for your body to make anything as a habit. So unless you do it every day like regular 20 days, your body does not get conditioned. That is why हम कोई भी habit form करते हैं वो हमारे साथ stick नहीं. So these are thumb rules for your body which you need to start practicing. As I said in the beginning of my conversation, that attaining a lifestyle is not overnight. It does not come to you overnight. It needs a lot of practices to follow, and once you start following that, you will start feeling the difference yourself. Yes, Shikha, it is 35 times you should chew every morsel in your mouth for the best digestibility, which I think agar aap by watch, if all of you who are present right now can tell me कि आप कितनी देर में अपना खाना फिनिश करते हैं. सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लेता है. सॉरी, 5 से 10 लोग ज़्यादा नहीं लेते, अनलेस हम रियली वी आर मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ. You mean if I have a one chapati, which will become my habit? See, we are talking about a healthy diet here, Pooja. We are not talking about having only one chapati. We are talking about a complete wholesome meal where you start with the salad, then you have a chapati part in it, which is for the carbs. You have some protein part in it through the sources, and you have a vegetable part in it. So the complete diet, when you put a chapati in your mouth, it is not a chapati. You are either eating it with the sabji or curd or dal. So it is the entire plate what you are having on your food, right? So that is, everything is one morsel. So आप पूरी जब चीज़ें खाएंगे, वन चपाती को अगर आप धीरे धीरे फॉलो करना शुरू 10 minutes, राइट? सो बाय वॉच अगर आप उसको 20 minutes ले जाना चाहते हैं, सो वन वे इज़ दैट यू शुड गो इट बाय वॉच. Second is that you should chew it at least 35 times, 30 to 35 times in your mouth each morsel. Automatically वो 20 minutes पे चला जाएगा, and you will start seeing the difference that your body will start feeling a feeling of satiety will come very fast to your body. पूरा खाना खाने के बाद भी जब हमें कई बार लगता है कि खाना तो खा लिया लेकिन यार कुछ फुल नहीं लग रहा, and then we reach up to popping out some
चॉकलेट और मीठा बिस्किट्स और व्हाटएवर. सो अगर इतनी जल्दी आपको 20 मिनट पे आप नहीं जा पा रहे हैं, स्टार्ट ईटिंग सौंफ आफ्टर योर फूड. कीप द सौंफ राइट नेक्स्ट टू योर डिनर ऑन द टेबल विद यू. चूज फ्यू सौंफ or a fennel seeds. You will be amazed to see the benefits of fennel seeds after your food, right? So coming down to, now again I said that again boosting your immunity is not one thing, it is a lifestyle. So guys, if we want to boost our immune system, if we want to stay healthy, it's high time that we should start incorporating all the habits in now. It's the time. Let's not wait for more worse time to come. We all are sitting at homes due to lockdown. कुछ लोगों के लिए काम खुल गए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं खुले हैं. सो जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वर्क फ्रॉम होम का. सो आप अब अगर उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप माइंडफुल ईटिंग इज़ व्हाट. डू नॉट ईट योर फूड विद टीवी और फोन्स. स्टार्ट ईटिंग योर मील्स विद द फैमिली इफ़ यू आर स्टिल नॉट ईटिंग. डिस्कस विद योर फैमिली. बहुत जब आप एक खाना खाने एक साथ बैठते हैं, बहुत तरह की बातें आप लोग एक साथ शेयर करते हैं. अपनी चीज़ें देख रहा है एंड कोई भी बेनिफिट किसी को भी नहीं हो रहा. ना खाने का बेनिफिट हो रहा है, ना साथ बैठने का बेनिफिट हो रहा है. सो प्लीज़ ट्राई एंड हैव मील्स टुगेदर. ट्राई एंड हैव मील्स एट ए रोज आप कोशिश कीजिए सिमिलर टाइम पे खाना खाएं. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. Also have enough amount, probiotics. It's very important to add probiotics for gut in your diet. A small amount of curd is very very important. आप curd add कर सकते हैं, fermented food add कर सकते हैं. जो I heard Modi ji saying in one of his interview in a TV during lockdown कि जितने grains हम पहले free में भी देते थे, कोई नहीं खाता था, वही grains, क्योंकि studies have shown that all grains are very very important for you. Grains like which has picked up quite nutritional value in terms of studies is like quinoa, ragi, jowar, bajra. These all grains have shown a lot of benefit for human health. So आप जितना nature के close खाना खाएंगे, that is what is going to be boosting your immunity. जितना आप junk food खाएंगे, too much of animal food is also not good for our body, because our body is not made to digest too much of the animal food. So you should restrict if you are into a habit of eating too much of that kind of food. So guys, if any queries all of you have, you can send me. I would love to answer it on your IDs back. Anyone has a question pertaining to anybody who is having a question pertaining to how you can boost your immunity through diet, you can put your question and I shall be answering. Yes, millets are very good for our body and you can have it on a regular basis. Wheat, it's not that you should restrict to more. Wheat of course does not have on a long more studies shows that wheat के benefits अब कम हैं, लेकिन आप अगर सीरियल्स मिक्स खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप वीट खाना छोड़ दीजिए. आप वीट खाइए, आप राइस खाइए, आप मिलेट्स खाइए. हैव मिक्स ग्रेन्स इन योर डाइट सो दैट यू रीप द बेनिफिट. ऐसा नहीं है आप जिसको ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है उसको वीट और मैदा एकदम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल को आपकी बॉडी भी यूज टू नहीं रहेगी. एंड इंडियन cooking में wheat is a very essential part of our diet. So you don't have to leave anything. You just have to reduce the amount. Different forms में आप चीला बना के, रागी का चीला खाइए, आप ज्वार का चीला खाइए, आप किनुआ का दलिया खाइए. इंस्टेड ऑफ आप दलिया की जगह यू ट्राई किनुआ का दलिया. इट इज़ अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी. एंड किनुआ इज़ द ओनली grain which is like a pseudo grain. And quinoa gives you a protein also which other grains do not give. So it's a complete lifestyle you got to work upon. I have my WhatsApp specialized programs on how to boost your immunity. So anyone who is interested to know more can get in touch on my number, which is 817-816-9302. Thank you so much all the viewers
who can thank you so much all the viewers for having me here, and like to say a big thanks to Astha Jain for giving me this opportunity to share my knowledge on this platform. Thank you so much guys. Signing off for now, Shalini Kumar from Shape and Shine. Thank you so much.